Let's go live. चलो what the hell was I doing? ठीक है क्या चलता है मेरे को. हेलो गौरव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. और बताओ कैसे हो. कर नहीं पाया मैं. ओके 5. हाँ ठीक है. आज का डे बोला जाए तो वेडनेसडे हो गया ना. यस, आज फर्स्ट है. वाह, हाँ बढ़िया हूँ यार. आप बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में. और स्काई, वेलकम टू द स्ट्रीम. जगत भाई कैसे हो. मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो. इंटरव्यू यार वो तो सामने वाले बताएंगे, मुझे कैसे बता. ओहो, बहुत लोग बैठे हुए थे क्या एक साथ ही. सबको नोटिफिकेशन गया क्या आज वाईटी का. चलो ग्लैड की गया है. और लूफी, बहुत दिनों के बाद लूफी को देख करके मैं आ लग रहा वाईटी ने भेजे हैं. मुझे कहाँ जाना था, वो नहीं फोर्स. तो और ये भी कर, चलो यार ये तो कर देते हैं जल्दी से. मैं हाँ यही है यार थोड़ा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही करा था. संडे को शायद करी थी स्ट्रीम. संडे को, हाँ संडे को ही करी थी स्ट्रीम. वाईटी का नोटिफिकेशन मेरा ऑफ है, मैं तो डिस्कॉर्ड का देख के आया. ओके, नहीं मतलब ऐसे इतनी जल्दी ना, अर्ली ऑन स्ट्रीम में जल्दी इतनी जल्दी लोग दिखते नहीं मेरे को. टाइम लगता है थोड़ा बहुत. और जिस हिसाब से मैं करता हूँ स्ट्रीम कर रहा हूँ उस समय हाल फिलहाल में, तो मुझे लगता है मुझे तो वाईटी का नोटिफिकेशन आया था. ओके, यो रोनी, वेलकम टू द स्ट्रीम. और रोनी कैसे हो. Take your pick. You'll find no आवाज कम आ रही है. second to Wagner's. गान्यू का गॉबलेट देखो आज ही रोल करा हूँ. ठीक है देख लेंगे. गाइस तुम लोगों को आवाज आ रही है कम, जल्दी बताओ. अब मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ बे, मेरे को जाना पॉट. मैं नेटलाइन बार बार क्लिक कर दे रहा हूँ. वही सोचा नेटलाइन पे क्लिक हो रहा है. ठीक तो है आवाज, आवाज ठीक है. ओके, फिर पाइमोन की गलती है, पाइमोन बैरी हो रखी है. बाकियों से पूछा मैंने, सब दो लोगों ने बोल दिया. अब रोनी को भी आवाज सही आ रही है. तो कान किससे खराब हुए, तुम्हारे किस. और बताओ गैस, तुम लोगों ने अभी भी शायद रीसेट हो गया है, अभी सर्विस कर ली है. बट हाँ फुल वॉल्यूम देना पड़ रहा है, तो यार थोड़ा बढ़ा देते हैं फिर. चलो अब बढ़ा दिया. अब बताओ अभी सही है, बेटर है पहले से. क्योंकि यार आवाज फटने ना लगे वो होता है ना. यार डन 36 स्टार है बस. क्या मेरा 12 बैठ का है. ओके, लूफी कर लिया शायद से. आज हुआ होगा, आई एम जस्ट थिंकिंग, नॉट श्योर. हुआ ही है शायद से. एक सेकंड वो. हाँ ना, हो गया हो गया हो गया हो गया. मेरा अबिस भी पड़ा है, मेरा इस बार का ये भी बचा हुआ है. बट बाय द वे चलो हम आए हैं ऑनलाइन. रुको एक बार मेरे को देखने दो. कुछ ऐसा तो नहीं है जो यार मुझे करना था और मैंने कर दिया है. किसी के टैलेंट दिख रहा. मैंने 2-3 दिन से लॉगिन ही नहीं किया. वाह बहुत बढ़िया. इसका मुझे मारना है बॉस, इसके लिए तो बुक्स है मेरे पास. नेवर माइंड, इसका कर दिया. इसका ट्यूसडे को होता है, तुम्हारा टैलेंट कब होता है. अच्छा तुम्हारा भी है और रखा है. ठीक है, अब तुम लोग मुफ्त करेंगे तुम्हारी ये बुक्स. क्या सेकंड का 11 पेड का सेकंड अकाउंट का. ओके भाई. हाँ बोलो 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 जल्दी.
तो क्यों नहीं कराया? किसने रोका है तुमको? ये काम निगवान कर रहा था ना मैं। निगवान कर ले टैलेंट कौन से दिन का है? अबे यार इसका भी मंडे पड़ता है। ठीक है, इसका मंडे वेडनेसडे हो गया ना, थर्सडे यानी कि कल ही है। चलो ठीक है, आज नहीं करता, फिर बुक्स रोकता हूँ, इसको करता हूँ निगवांग बिल्ड करने के लिए। व्हाट अबाउट यू बाय द वे? इसका टैलेंट रेफरेंस अपग्रेड फर्स्ट प्रायोरिटी इसका लेवल अप है। बर्स्ट डैमेज अटैक बोनस। हाँ, एक सेकंड। After gathering the son of someone, you will strike the opponent surrounding her within a large and dealing deal. Enemies attack damage to the ओके, अटैक डैमेज बोनस इसका बढ़ता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, सही है। हाँ हाँ, देख रहा मैं, देख रहा हूँ। नेवर माइंड, पहले लिंगवांग बिल्ड कर लेंगे, फिर देखी जाएगी। छोड़ो, फिर टैलेंट नहीं करना मेरे को। टैलेंट के लिए कल दिन है हमारे पास, आराम से करेंगे। तुम्हारी कॉलोनी का गॉबलेट देखते हैं, चलो पहले। रोनी 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 कॉलोनी का गॉबलेट। हाँ, और भाई चाय पी लो। नहीं यार, चाय नहीं पीना भाई, गॉबलेट ना। अरे भैंस की सही बता रहा हूँ रोनी, बहुत मारे जाओगे तुम। ये दिखाने की चीज़ है? ये कोई दिखाने की चीज़ है? ये कोई दिखाता है? और 46 सीबी का गॉबलेट लेके आया भाई फ्लेक्स करने के लिए। नोएल और निंगवांग। पहले निंगवांग करूंगा क्योंकि डीपीएस है ना, थोड़ा डैमेज चाहिए होगा अब इसमें। सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, हो जाएगा, बट वो हो जाएगा। कॉलेज विद्या ऐड आ गया, चलो अच्छी बात है, ऐड आया, ऐड दे रहा भाई मतलब एटलीस्ट ठीक है। आज ही मिला है, ओके। यार फील होना ना भाई। मेरा रात में आई ट्राई टू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 9:30 भाई। चेंज करना है लाइफ में, तो थोड़े बहुत चेंजेस करना हमने शुरू कर दिया है। तो दिस इज समथिंग अराउंड दैट। बॉस डिफीट अपोनेंट। मेरा एक आधा बॉस मार सकते हैं, बट छोड़ो, आज अपन सीधे। It's time to move on. We shouldn't stay here. थोड़ा भाई मेरा किनेचर अलाइजम देख लो ना, ये भी सही है। नहीं, नथिंग इन डाइट, वो डाइट नहीं है, जस्ट टाइमिंग्स। टाइमिंग्स दैट्स इट। टाइमिंग सही कर रहा हूँ, नॉट द डाइट। डाइट तो चलो ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ईट वट एवर गुड आई कैन डू दैट। दैट वो है। ट्रॉन्स वाला पूरा किया बीपी का। हाँ, नहीं अभी तो वो कर लूँगा, वो नहीं ना, या रेजन नहीं है मेरे पे। अभी तो मैंने कन्वर्ट के लिए, अगर वो मैंने देखा नहीं होता तो ठीक होता, बट कर लिया, कोई बात नहीं। निंगवांग का वैसे भी निंगवांग की ज़रूरत है मेरे को, निंगवांग को पहले दूंगा। तुम्हारी आईडी का नाम क्या रहा था? वैनिटास, हाँ मुझे याद आया, वैनिटास का होगा। फिर वेयर यू करंटली इन इंडिया। किन्नेच और कौन सा बोला था? करते टाइम मिल गया। किन्नेच और लाइक, चलो लाइक हम पहले तो लाइक हम देख लेते हैं। अटैक थोड़ा कम है, ठीक है, अटैक करना है हल्का सा। ईएम तो चलो बढ़िया बैलेंस है, 62/2.5। थोड़ा क्रिट का वो पंगा यार, इतना आई डोंट थिंक सो उसको लगेगा यार। है पर पॉइंट ऑफ ओवरकिल और डेंडो डैमेज बोनस 68.2। डेंडो स्केलिंग कैरेक्टर है क्या? ओके, क्रिट रेट तुम्हारा यहाँ से मैनेज हो जाता है तो ठीक है। उस हिसाब से अगर 68 है और 28, 62 और 28 हो गया 8, 70, 70, 90। फिर थोड़ा क्रिट रेट कम कर सकते हो ना, अगर ये वाला वेपन दे रहा हो तो थोड़ा सा क्रिट रेट कम कर सकते हो। खाली मैं ही मार लो वुल्फ को, मैं खाली मैं ही मार लो उसको। अरे वो तो कर लूंगा भाई, मारने के लिए क्या है, जरूरत थोड़ी ना ऐसे है। ओके, पहला पीस अच्छा है, नाइस, दिस इज अ गुड पीस। व्हाट अबाउट यू? क्यों दिया है ये? ऑफ पीस दिया है, क्यों दिया है मतलब? इतना खास है नहीं।
20 6 26 CD EMB 21 ही है यार, इतना ज़्यादा तो आई थिंक सो। अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारे पास फॉर श्योर वो होगी होगी नाहिदा, है ना? तो नाहिदा कह रहे थे, नाहिदा जनरेट करके देगी ना पार्टिकल। नाहिदा स्विच मारो इसको, नाहिदा का काम ही यही है। ओके, इट्स गुड इनफ, गुड इनफ, नॉट गॉड लेवल बट गुड इनफ, क्योंकि ऑन सेट है तो बढ़िया ही है उस हिसाब से। ओ भाई क्रिट कैरिंग पीस सही है। 17 यानी कि 35 CV और 7 तो 42, 42.8 CV विद ER एंड HP। बहुत प्यारा। एंड टू पीस बिल्डर नहीं, अलाइतम को भी 4 पीस दो भैया। ओकेश, ओकेश पर मैं कहूँगा भाई 4 पीस बिल्ड गिल्डेड दे दो, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी टैलेंट से बहुत बड़ा पंगा है मेरा भाई साहब। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम इसकी बस्ट छोड़ रहे हो। बस्ट, और बस्ट पहले आती है आई थिंक सो, बस्ट इज द प्राइमरी। उसके बाद जैसे तुम्हारा काजुआ का होता है कि बस्ट और स्किल वाला, सेम इसका भी बस्ट और स्किल चाहिए होता है। बस जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, थोड़ा सा एज ले जाता है स्किल के ऊपर, तुमने बस को जोड़ के रखा है। नाहिदा क्यों गिल्डेड पे चला रखा है? नाहिदा को इस पे चलाओ ना, तुम तो काम ही उल्टा कर रहे हो। अगर अलाइथम है तो नाहिदा, अलाइथम वुड बी द DPS। फिर नाहिदा उस समय DPS करना ही नहीं है चाहिए, और कुकी को डीप पुट्स पे चला रहे हो। चलो कुकी डीप पुट, कुकी जो चौथा क्या चला रहे हो? हाइड्रो कैरेक्टर कौन सा चलाते हो? ओके, वेपन में अर्थ शेकर है, ठीक है। 27। और हेलो इमरान, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑब्सीडियन वाला है ना, ठीक है। 45 ओवर वो 40 मिल जाता है, 85 ठीक है। 214 के डैमेज, ठीक है। वेपन नहीं है तो उस हिसाब से EM बिल्कुल ही नहीं है। 19 मेरा कुकी के लिए EM नहीं मिल रहा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चल रहा है तो फिर good enough। सही लग रहा है मेरे को देखते हुए। देखना पड़ेगा बाकी। और एक सेकेंड, डेंडो क्वालिटी ना, हाँ। ओके, दिस इज अ गुड पीस। 18 बढ़ते सेफ। हेलो आशुतोष ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऊपर से हारमोनियम धोखे पे धोखा देते जा रहा है। हारमोनियम है, हारमोनियम भाई। ये तो चेंज कर लेना है, तो कॉपीएम है, फुल ऑन कॉपीएम है भाई। तो तुम स्ट्रीम मेरी दशहरे की हॉलीडेज के बाद कर रहे हो? नहीं यार, मैं स्ट्रीम करने के वो था ही नहीं मेरे को। दशहरे वाले दिन करी तो थी शायद से मैंने स्ट्रीम। उस दिन भी मेरे को कट शॉर्ट करके जाना पड़ा क्योंकि बीच में आ गया, वरना वो दिन अच्छा खासा स्ट्रीम। हारमोनियम वही सोचा, हाँ। अरे भाई ओके, ठीक, समझा समझ गया, समझा भाई। वही सोचा, हारमोनियम धोखे तो बढ़िया है। ये भी कोपियम है बट ठीक है, ऑन सेट है तो चलता है। दिस इज गुड, 35 CV, दिस इज गुड। ये भी अच्छा है, क्रेडिट के रोल्स अच्छे गए। वो ऑल इन ऑल सही है। 2 पीसेस ये और ये कर लो, ये तो ज़्यादा ज़रूरी है करने, ये और ये मिल भी जाएंगे इजीली। ये तो चांसेस है मिले ना मिले उतनी जल्दी, डबल क्रिट आए और फिर अच्छा रोल जाए। बट हाँ, ये करो, बढ़िया हो जाएगा और बेटर रोल हो जाएंगे। और इसको भी कर लो, 6 करा है, इसको क्या पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। टैलेंट के साथ दुश्मनी मत रखो यार, टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I चलो do मूविंग hope ऑन। the Knights of आज का Favonius. हमारा गोल क्या है वो देखते हैं। डेलीज में जो बचा है ना वो उड़ाते हैं जल्दी से। माइन करके जल्दी All से। working hard. या माइन की ज़रूरत ही नहीं, माइन उसमें कर लेंगे। अपन चलते हैं अभी। आर्कन करना है मेरे को, मैं मूड में आया था आर्कन क्विस्ट के। लेट्स गो भाई। आप बहुत अच्छे पॉइंट पे स्टोरी पिछली बार हॉल्ट हुई थी, जो उसका फर्स्ट पार्ट था। 5.0 का आर्कन, 5.1 का यार आर्कन भाई आज तो करना ही करना है अपने को। चलो लेट्स विदाउट All right. फर्दर अडू, लेट्स गो। I see.
Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. नोविलेट का वेपन निकालूं या आर्ले का? यार दोनों नीश हैं। पर नोविलेट अभी तो आ नहीं रहा है, वो कर सकते हो। वाह सुशांत, वाह। It's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. बट अभी आर्ले आने के चांसेस ज्यादा हैं 5.2 में, तो आप निकाल सकते हो। आर्ले का वेपन अगर निकालोगे तो अच्छा ही है। इट्स नॉट अ बैड वेपन। आर्ले पे तो बहुत अच्छा चलेगा ऑब्वियसली, बाकियों को उतना यूज आए ना है, बट आर्ले के लिए बढ़िया है। जोंगली, अभी जोंगली कहाँ आ रहा है? नेक्स्ट उसमें जोंगली नहीं आ रहा है, जोंगली मोविका के बाद ही आएगा। यानी कि 5.1 चल रहा है, 5.2 में वेंटी के आने के चांसेस है, 5.3 में मोविका के, और 5.4 में जाकर के आपके जोंगली के। बाय द वे अगर स्ट्रीम पे नए हो, लाइक नहीं किया यार तो कर दो लाइक। मैंने एटलीस्ट कम से कम 7-8 लोगों को आके देखा है और लाइक्स उतने नहीं है। बाय द वे ये सब तो चलता रहेगा, मुझे आर्कन पढ़ना है। हाँ चास्का आर्ले वेंटी और वॉन्डर ये सुनने में आ रहा है, बट देखते हैं। The word of anonymity we can notify them. Yes, क्या ओके ठीक है, चलेगा। Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. वेंटी आएगा। You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. क्योंकि इवेंट भी आने वाला है ना मॉन्स्टर का, इसलिए। We can finally stop and take a break. It's still far from but the less we take, the less we know. Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. Paimon. Yeah. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be इतना मैंने sooner कैथरीन rather को than ज्यादा later. बोलते हुए नहीं देखा है। आज कैथरीन बोल रही है इतना। Most people have no idea just चास्का how तो bad आई the नहीं, चास्का situation का has तो gotten उन्होंने in वो the निकाल Night दिया Kingdom. है, ड्रिप मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, सब कुछ हो गया। चास्का तो कंफर्म ही है कि आ रही है। ओहो कचीना। Hey, Kachina, are you feeling better now? Yeah, you were lost. और ये जो खराब, ये मूड खराब करने वाली चीज है यार। भाई कचीना की वॉइस नहीं है यार। The more remote areas like place now. यार रुको, ज़ोंगली बहुत बाद में अभी, तो कैन नॉट से हो सकता है। Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. Yeah. आर्कॉन ही चल रहा है, यस। अरे इसके वॉइस एक्टर्स जो हैं, जो डायलॉग बोलते हैं ना, वो थोड़ा प्रोटेस्ट खेल रहे हैं, तो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए तो बहुत मारा जाएगा। ये वाह वाह जो लिख रहा है ना, जानते हैं ना, मेरा रिस्पॉन्स आएगा तो the pilot question of to give your name and then we should probably thank her when we signed up as a warrior. Wait for my sign. आवाज कम आ रही है, तेरे कान खराब हो गए हैं, तो मैंने बढ़ा भी दी है। Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden गेम Wars. की आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है। अबे बीच में बंद करो यार मेरी, अब मुझे वो वॉइस चेंज करने दो, वॉइस मेरी डाउन होगी। तो चूंकि अपना वो बढ़ा, हाँ सही करा जा करके। मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, बाकी सब सही आ रही है। आर्विंजर का रीजन आ गया। तू मत आ, तू डीसी मत आ, बिल्कुल मत आ। तो लैंग्वेज में वॉइस ओवर लैंग्वेज अगर मैं डाल दूं जापानीज, डोंट टेल मी, मुझे देखते हैं।
1500 मीटर दूर जाना है इसका। हार्बिंजर का रीजन, हार्बिंजर का कौन सा रीजन है भाई? じゃあ行くよ。 शिलोनेट का ये बहुत सी चीज है। करायो रीजन अभी तो पायरो आया, तुम करायो के लिए भी जा रहे हो? पायरो तो ढंग से कर लो, तो पायरो का पूरा वो तक नहीं आया। नहीं मिल नहीं आया शिलोनेट। शिलोनेट से मैं शिलोनेट बन के मिलने जाऊंगा। Where the hell is she? हार्बिंजर गॉड से रखते हुए। 白根お姉さん、コメが必要な人を連れてきたよ。 बेटा सर्वर म्यूट दे दूंगा, तू आप सही, なんだよ。 तू आ, 私、 तेरे को सर्वर म्यूट いっ देता ぱい हूँ 学 मैं। ばせてもらってるの。この人の सर्वर म्यूट दूंगा, साले हटाऊंगा भी नहीं, बता रहा हूँ। そのことは聞いてるよ。 Alreadyすごい勢いで有 quite 名 the になったって。 reputation. 違法人なの？ Outlanders? オイラたちは中に来た旅人だ。 नहीं भाई मैं नहीं झेल पाऊंगा, पाइमोन के बाद नहीं झेल पाऊंगा प्लीज, मैं चेंज कर रहा हूँ। 聞いてなかったんだけど。 नहीं इंग्लिश में तो फिर भी चल जाती है, ये नहीं होगा। エンジン様から聞いてないの？うん。新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには、新しく米を作らなきゃいけないとしか。米を作るのはかなり難しいって言ってたから、 Remember the time of うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。 難しいってそういうことね。 怒ってる？ 別に、もう慣れっこだしね。ただ、ちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっかふっかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。面と向かってやりとりしないのは、かえって効率的かもね。あいつがいないってことは、喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だって、あんたたち相手に怒るわけないでしょ？でも頭は分かってるけど。 अच्छा लग रहा है इंग्लिश में। अरे यार पाइमोन की आवाज चुपती है मेरे को इसमें, भूल गया था मैं। そうだったのか。 ये राम राम आदि भाई, वेलकम टू द コ स्ट्रीम। メは英雄の輝かしい精神を象徴してる。受け継がれるたびにその重さも増してくもんなんだ。コメを作るっていうのは誰かの英雄的な功績を記録すること。その人はコメの最初の英雄になるってわけ。そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど、何でもできるって書いてあったよ。それはナタ以外での経験でしょ。それはそうだけど。 By the way guys, अगर स्ट्रीम पे नए आ रहे हो ना तो लाइक कर देना। そういうのはヤガミの国に記録されない。そもそもたとえナタでの経験であっても、違法人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験はコメの素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも無から有は生み出せない。そういう。 आज कर दिया है तो आज चैट पे बज देगी आज पाइमोन। マー मैंने ビカ कह は दिया, 誰よりも मैंने それを पहले 知ってる कला, は मैंने ずなの पहले に、 कला। それでも米を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。怒るのも無理ないぜ。こういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど、白根お姉さんは近くの山を何十周も走ってたよね。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。Okay. もう納得しちゃうのかよ。 Accept the じゃあ task. どうすればいいっていうの？もう決まっちゃったことだし、 Shall I cannot try to マ find ービカ out は of エン my ジン様だよ。 own. 命令に背くわけにはいかないでしょ。そういう要望を出してきたってことは、 इसको भी C2 करूंगा but あい not つの right 計 now. 画ではコメが必要不可欠だってこと。で、うちの腕ならなんとかできるって思ったわけ。 अभी うちを बीच 信 में 頼 ऐसे してや छोड़ना らかしたもい इम्पोर्टेंट る。 नहीं है। C2 कर नहीं पाऊंगा, C1 कर लूंगा 自分を説得しに मतलब かかっ नहीं て है। るぞ。 तो मुझे C2 करना है पहले आर्लेचिनो को। शेन आर्कन का सीच है। そうだね。何か बीच में एक चीज 方 को 法が आधा な नहीं いか छोड़ना 考え चाहिए। よう。もしできなかったら、エンジン様に नहीं मुझे बंद नहीं करना है क्योंकि बंद कर दूंगा तो अच्छा भी नहीं 重 लगेगा। 要なのは
どうやって大霊に旅人のことを認めさせて、その功績を記録させるかってとこだ हाँ よ。 और भी हैं 前にヤガミの国に行った राइडर 時大霊の声が聞こえたよな。ってことは大霊と हाँ は पता 交流で है きる यार ってことか？ फौजी जैसी गेम जैसा गेम आया मार्केट में इंडस्ट पता है मेरे ない को のか？ 部族にはそれぞれ信仰する大霊がいる。連絡 मैंने する देख となる लिया と उसका どの大 जो 霊に連 देखना 絡 था すればいいんだろうね。 इससे ज्यादा कुछ こ नहीं んな बोलना の है 前 मेरे 代 को 未聞だ उस し、 गेम के बारे में 一体の証人だけじゃ足りないかも。 ओके गायब थे यहाँ そこについてはうちもよく知らないし、わかんないよ。大霊とヤガミの国に詳しい人に聞いてみないとね。そっちの方向で思いつくのは、 Lali at the Masters 永 Night 遠の Rain, the 主の one グ we ラス call バーバー。 Granny シトラリか Itzli. な。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげでカチーナのコメを見つけられたんだ。あんなものが作れるくらいだからきっとすごいやつなんだよな。力になってくれそうだぞ。でもシトラリは結構年がいってるし、変わった性格なんだよね。いつも家に閉じこもってて邪魔されたくないっぽいし、会うのはなかなか難しいと思う。それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それはどういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？おかげでカチーナは助かったんじゃ。 जसार ने सही नोला था スピリットストーンは一つから二つに इंडस से なったんだ。 जसार ने सही नोला था हैं? やって बोला था くれ मुझे る समझ よ में う आया な अब ये जसार कौन है こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。それならマービカからの重要な命令って体で言ってシトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど、届けてくれる人も取り持ってくれるような人だったらもっといいんだけど。 देखो मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन कितनी नहीं रखनी चाहिए मुझे भी पता था वो चीज कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए पर シトラリおばあ様とも仲 फिर が भी 良さそうだった。 एक लेवल होता है कि एटलीस्ट इतना करो बहुत हाई लेवल पे नहीं जा सकते हो क्योंकि इट्स अ स्टिल स्टार्ट वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडियन गेमिंग キー इंडस्ट्री ニチは交渉に立て डेवलपमेंट てるし、 इंडस्ट्री いい感じに空気 तो を読んでくれ पर るでしょ。 इतना भी नहीं करना चाहिए कि तुमको पता है कि गेम के 手 कॉन्सेप्ट 紙を तो 書いてくるからちょ देखे っと待 सकते って हैं て。 ना मार्केट में इतनी नई सारी चीजें आई हैं देखी होंगी खेली हुई होंगी इतना नहीं करना चाहिए था इससे ज्यादा ही उम्मीद थी मतलब मुझे ये नहीं था कि उम्मीद तो मैं नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई चीज अगर आप नहीं कर रहे हो ना नई अगर हो रही है तो उससे इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए पर इतना भी नहीं गंदा करना चाहिए समझ रहे हो हो गया आई हैव टू गो वेयर लेट्स गो भाई स्टाइल तो है शिलोनेन में टू सही है गेम प्ले स्टारफल 2 गेम प्ले बेस्ट है लाइक ओल्ड गेम है वो मैंने देखा नहीं है we meet again Kachina told me everything I didn't message the master night she asked me what happened to the split speaker soon offer her a phone Yeah, I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the and only I person like who her knows how voice to better deal in with her. English Shilonen ki you understand how dire the situation has become okay समझ रहे हो Oh, wait. So Kachina and the Traveler also know about the plan? Yes, we all saw fear of past materialize right before our eyes. And then Molly said, reason behind that principle. State of the Night Kingdom. Right. She Okay. mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. हाँ, okay. Well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having उम्मीद companions करता हूँ walk by हमें your PUBG का side is अल्टरनेटिव मिल perhaps जाए the best solace when PUBG का facing such a bleak अल्टरनेटिव नहीं reality. ढूंढना चाहता है ढूंढो कि कुछ अच्छा और मिल जाए कुछ नया मिले और ढंग का मिले तुम एक ही चीज पे हो रहोगे तो वो क्या ओके This event unnoticed by the times when he realized that he was gone. No one had heard from him quite a while. Okay. Jeez, put her on. देखते हैं. See, Lolly knows him too? हम्म.
Many other kind of styles. Chili's had something of an odd reputation his whole life. Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Okay. Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. He's not gonna be a high star. That is the for sure thing. Makes sense. But Paimon wonders how Seat Lally could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Right. Confirm whether Ron joined the Fatui voluntarily or if he was coerced. But it is people I plan to push this as level. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Okay. And then it becomes a mutually beneficial collaboration rather than just one-sided request. Don't think Settled is an friend on whether with us will help her focus on not get a whole lot of it. That's a good idea. Yeah. Yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Yep. Ah, this is a pretty well thought out plan. PUBG, As then Free Fire, then expected of COD, then Molly Apex, then Kokenich. PU, then Mention. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Okay, Kenneth. Take care, buddy. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. पर कैसे भाई वो बता रहा है जो वो उसने खेला है in the morning of the day after tomorrow अब वो खेलने वाला लेट्स गो भाई इतना आराम अरे भाई ये तुरंत शुरू हो जाता है बस Okay, I hope it's sorted now. अबे अच्छा मॉर्निंग है मैंने नाइट टाइम रखा हुआ है तो मॉर्निंग तो हो गई ना कंफर्म लेट्स भूतनी वालों अब क्या जिंदगी में क्या चाहिए तुमको दोपहर भी कर दे रहे हैं यार Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Let's go. ये तो मैं भी नहीं खेलती लेकिन मेरी आईडी खेलती है Hi, Traveler and Paimon. तुम पहले भी नहीं खेलती थी I have तुम्हारी bad आईडी news. खेलती थी Seat Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? It does have Guess quite she a really name. does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do Okay. get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. Let's go then. That's true. Let's go! Well, 1400 meters. I'm not gonna go on. आपका आपने जनरल स्ट्राइक किया क्या मेरे से पूछ रही हो ना मेरे पास ना मैंने डाउनलोड ही नहीं करा था मुझे नहीं मतलब मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं था जनरल पहले ही Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? मैंने नाम नहीं सोचा था पर नहीं मैंने नहीं करा था Well, we We tried to tried be to as be as specific considerate as as we we could, could. but she's under no obligation to help. That might be Seems true, like but this true. is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the they subject always always answer answer the to the call of call. their Archon?
A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. That's good. The only thing is that she often has very high expectations of us. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? Wow. We यही है all final. talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. But Paimon will. Oh, really? So, that's how Yeah, you see me? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Lol. Huh? See, Lolly. Yeah. Wait, And I am waiting you're for so you to Lolly? come. You're Granny Eatstily? Granny. Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Lol. Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. But ये I कौन forget to देखा? mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. Already were the park on living things out. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Lol. I'm sorry. So, how old are you actually? Older. How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So Just if you're take it on me. upset, you can just take it out on me. All right. Welcome back, I was okay. only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. भाई मुंह ऐसे बंद Besides, थोड़ा तो just एनिमेशन showing डाल up दो is the जंशिन most वालों important थोड़ी part. मेहनत कर लो. No. But, of course, it's also natural for people to get held up ये by कम से one कम thing or यही है. another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Oh, literally, Only you're to hear you all talking smack about me. Oh my days. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. ये भी सही है. Why there's a silence? What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? I think she's saying When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. भाई Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The if situation she's isn't the one like anything who we've we handled all before. know as she's the one, Let me explain. then बहुत पुड्डी है वो. मतलब तो I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. Anria I में must say, Archon he's ही तो always been नहीं a good होता. kid.
तभी तो I बेचारा can't see खानदिया him नहीं joining रहा the Fatui of his own volition. क्योंकि कोई आर्कन नहीं He था. must have been coerced somehow. Okay. Yeah, that's what I came here to ask you. We'll help bring Auroran back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? भाई तो प्रिंस है ना. I suppose I'll just call you Traveler for now. सिटलाली का Traveler, छापड़ किस come पे here. पड़ने वाला है इस Let me take a good look at you. ऐसा भी है. देखते हैं. Okay. ये क्या हाथ छू के नाम बता देती है? Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Again and again. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. O weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. What the hell? Exactly, excuse me, what was all that supposed to be? Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than Then even even most most mortals mortals could could dream dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Okay. Huh? Don't move. There's something. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! Sorry, why? What? That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Hello, Ed. Welcome to the stream. Kinda like having part of a ghost come back with you? Wow. It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind. Raiden गई क्या? And हाँ, generally Raiden worsen your गई. mood. Oh, in that बहुत दिन case, हुए better to Raiden get गए. rid of them. क्यों? It Yeah, was I guess. nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroran back, I'll take you to see the Lord of the Night. Yeah. The Lord Yeah, of such the a Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. Bad luck for me. The then. Lord of the Wow. Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're Okay. basically saying it's even more powerful than the Wyab of the अभी tribes. mention हुआ झापड़ Well, खाने that वाले sort का. of makes sense, being the Lord अच्छा. of the entire Night Kingdom and all. Okay. Not exactly. ठीक है. It's कोई not बात so नहीं, much देखते that हैं. one's more इतना powerful आगे का than नहीं the सोचते. other. Let's not get ahead of ourselves. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. Okay. In other words, in a dream. Okay. But I will need to prepare a few Do more you mean things if we lucid are to hold a dreams? ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of any you of get you everything for me? I can Sure. go. Okay. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Okay. Sounds Shilona's good. And we'll good. go with St. Lolly to track down Auroran. Phew, the Fatui are अभी nothing to बैनर scoff चल at, so रहा है please, शिलोनेन be का careful during your द न्यू कैरेक्टर investigation. जो अभी If बात you कर need रही any है वो help, just come जो find खड़ी हुई me. कैरेक्टर है Yep, और I'll be sure to play it safe. दूसरा चियोरी. All right. Now it's time for For us to catch that brat and bring him back. Let's do it. Sit lolly. Let's do it. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroran's place to look for clues. Never mind. He has always lived alone. And I found a broken मैं jar in his सजेस्ट house. करूंगा शिलोनेन There निकाल was लो. also something But off at about the his end of the day, phlogiston तुम्हारी choice है. aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Yes, Oh, ना ये sounds ना. like the Fatui broke into his house and took him hostage. Okay. But why would they kidnap a kid who just
Spends his days living in the country and raising aphids. He's only in his 20s. What would they want with him? Okay. That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Theory Natlan, खराब है. Theory must have खराब done नहीं है, but I something to won't say attract their कि attention. अगर तुम्हारे पास सारे In कैरेक्टर any हैं और तुम case, ऐसे बस we'll get कैरेक्टर to the कलेक्ट bottom करना of this चाहते हो once तो we निकाल manage लो, to get कोई him दिक्कत back नहीं here. है. But I'm unless truly sorry to मतलब put you बहुत two through ज़्यादा all this टीम्स में trouble यूज with नहीं me. कर पाओगे चियोरी को. But चियोरी का please help me सब get him DPS back. कम बफर. You can count on us. ठीक है. तो वो नाविया के लिए एक अच्छा Then बफर let's start by है. heading to where Auroran was seen नाविया को अगर last. डीपीएस बना के लाना चाहते हो. बाकी तुम चियोरी को डीपीएस भी बना सकते हो, बट बेटर वे है उसका. इसलिए बहुत ज़्यादा टीम्स में नहीं चलती ना वो. उसका सीन यही है. भाई इतना करा 4 मिल गए. वाह क्या बात है. मतलब हमने एक पार्ट एक्चुअली में खत्म कर दिया है. बट नेवर माइंड, हम कैरी ऑन करेंगे. अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है. इतनी जल्दी तो अपन बीच में फॉल्ट नहीं करेंगे. Bring it! कलेक्ट कर लेते. पास में था. क्या कलेक्ट कर लेता? This is the spot. पायरोक्लस. An eyewitness claimed to have अभी seen वो बाद में Auroran देखते हैं speaking to अभी. some Fatui soldiers here. I don't Okay. know how much you're willing to believe me, but Auroran really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him, or perhaps trying to extract information. अरे मुझे However, उसके पास भी जाना है ना. I doubt anyone would believe me, कैथरीन के पास तो given there are no signs of a fight. दोनों अच्छा कैथरीन के पास ठीक है. Can दोनों each चीज say मिलना. that she's ठीक a है. big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. True that. Auroran? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. He learned a lot from us, and once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer. He can once we answer find him, all yeah. of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. Okay. We can use that substance to track his movements. Let's Sounds follow the fair enough. phlogiston trail. Then let's go. What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive Lol. such things. Here, give me your hand. फटुई से फाइट होगा शायद. टीम कर लो, याद नहीं आ रहा. कोई बात नहीं. तो भाई. That's why I want Sitlali. I will bring you home, Sitlali. I will bring you home. How about now? What do you see? Okay. Whoa, Paimon can see it now too. पायमन भी That's देख right. सकती है. I used a spell to Sitlali 5 temporarily star, transfer a most portion of my probably 5 star senses to होगी. you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston Well, too. बोल सकते हो ऐसा. Wow, you can Oh, even share Sky your Lord. senses with us? Welcome First to time Mini Farm, Paimons heard buddy. anything like that. Thank you so It much requires for a the very support. rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, क्या it's a बात है? cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. Lol. When I held your hand just now, I could sense Great. that you've got a great affinity for phlogiston. Yeah, You're sure. extraordinarily gifted. Anyway,
We'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of... In that case, I will go for अच्छा ये है team idea. तो बताओ. Want me to come along? वैसे अभी भी खेल रहे हैं What was that? Sky. Oh, Paimon was just complimenting you. Really? Jinshin. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that ये I'm voice already तो pretty easy to talk to. पहचानी Is लग रही there है. any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now, Okay. or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Ugh. Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? What is happening? Oh wait, it wasn't in my ears. Was it all in my mind? Was that Seat Lolly's voice? ओ भाई ये लोग सीट लाली की आवाज सुन सकते हैं. लोल. अरे रे क्या बात है जगत भाई. Second member of the stream. Welcome to the mini fam, buddy. How about Ayaka, Reedem, Kokomi, and Furina after the 5.2 boost to Superconduct and Electrocharge? Ayaka, Reedem, Kokomi, and Furina. कोकोमी और फ्यूरिना दोनों क्यों? अगर सुपर कंडक्ट और इलेक्ट्रोचार्ज पे जाओ Now तो that I think about it, it's a good thing I found some helpers But this this time- time. Some things are best Present done with the help of friends. फ्यूरिना हीलर भी है, वो हील कर भी सकते हो, मतलब हेल्थ लेती है तो हेल्थ दे भी सकती है भाई. हीलर भी अच्छी ऐसी है. इट्स नॉट नेसेसरली कि तुम्हें फ्यूरिना के साथ एक हीलर चाहिए ही चाहिए, जरूरी नहीं है. और अगर है भी तो मैं शिलोनेन ज्यादा उस टीम में पसंद करूंगा. They appear to be feeling quite confident. Looks like our मैं work will go शिलोनेन पसंद smoothly. करूंगा ज्यादा उस टीम में. रेजिस्टेंस भाई पेमेंट में अटक गया था. अरे रे जगत भाई देखो, अगर तुम वो बोल रहे हो ना टीम, तो ठीक है, इट कुड वर्क. आई मीन टेक्निकली इट कुड वर्क. वो 5.2 के अपडेट आने के बाद कैसा डैमेज, जो मल्टीप्लायर जो चेंज होने वाले हैं ना उनका एलिमेंटल्स का, वो देखते हैं. वो एक चीज़ देखने वाली होगी एक्चुअल में, जो बूस्ट वो दे रहे हैं. ठीक है, बहुत टाइम के बाद ऐसा बूस्ट आ रहा है जो कि तुम्हारे एलिमेंटल डैमेज को बढ़ाएगा, तो अच्छी चीज़ है. बट स्टिल मैं वहाँ पे कोकोमी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी उस टीम में, मैं प्रेफर करूँगा शिलोनेन को रखना. तुम्हारा एवरीथिंग इट विल बूस्ट. रेजिस्टेंस शेड इतना अच्छा खासा है. 30%, 36 हो गया. शॉर्ट 36 तो तुम्हारे 3 एलिमेंट के 36 उतार देगी. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के 36. अभी यार यहाँ पे आ गए हैं तो हमारे पास Hey, युमका looks सॉरस like नहीं there's है a new यार. camp over there. We don't have a Yumka Let's go Saurus take a here. look. That little brat, I swear. I just hope he hasn't gotten himself into any real trouble. कहाँ है? अच्छा ये रहा क्या यार. सही बता रहा हूँ, मतलब मैंने एक्चुअल में ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया ना. वाईटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वरना मैं स्टिकर्स के आइडिया एक टाइम पे थे. बट अभी जब वापस अगर जब मैं एक रेगुलर बन जाऊंगा ना, The then phlogiston we'll here is update a these bit things. odd. है माइंड में मेरे पास आइडियाज, बट Let me see. तब फोकस करूंगा इस चीज पे. आई होप या तुम्हारे लोगों के माइंड में अगर कोई स्टिकर है जो तुम लोग को चाहिए तो वो मेरे को डिस्कॉर्ड पे शेयर कर Could सकते it हो. be some sort of symbol? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. For what Only type of- someone from our tribe would recognize it. Okay. So Auroron was indeed being threatened.
We've ओके got to find him. Fast. खाली जशन खेलते हो क्या Even such कोई a और subtle mark गेम? implies that he was क्या trying to स्ट्रीम be के लिए बोलोगे तो discreet. स्ट्रीम तो अभी मैं In other काफी words, टाइम से he was इरेगुलर हूँ probably under the Fatoui's watch. बट If they notice फैज़मो this, कभी we खेलोगे can या just नहीं? charge in and fight them भाई to the देखो death. मैंने फैज़मो इंस्टॉल नहीं मारा है But बट द थिंग फैज़मो के लिए यार what if my प्लेयर्स darling और लगते हैं grandson is मुझे also there? और मैं रेगुलर Can't have स्ट्रीम ही नहीं him कर रहा हूँ caught in ना the मतलब मैं दूसरी crossfire. चीज़ों में बिजी हूँ तो इस वजह से No, वो नहीं है I've got to be बट अगर careful. हाँ करूँगा Otherwise वापस से he'd स्ट्रीम get जब hit as रेगुलर हो well. जाने तो मेरे को थोड़ा सा बाकी How चीज़ें annoying. थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो No. जाए मेरी लाइफ की No, I've got to stay टाइम का एक calm वापस से एक फ्लो keep my कॉमन हो composure. जाए फिर वापस स्ट्रीम में रेगुलर आएंगे जब रेगुलर आएंगे तो ऑब्वियसली फैज़मो आ जाएगा और रही बात एच भाई तुम्हारे आंसर की तो अभी जनशेन रेगुलर रहा तो फैज़मो भी आ जाएगा साइड बाय साइड मैं खेलता हूँ वैलोरेंट उसमें अपने आप को ट्राई कर रहा हूँ अभी बट उतना अच्छा नहीं है मेरा गेम प्ले कि मैं ये बोलूँ कि वैलोरेंट को मैं स्ट्रीम करूँगा जब हो जाएगा यार वैलोरेंट स्ट्रीम करने लायक वाली स्टेज पे तो कर देंगे बट फिलहाल अभी वैलोरेंट उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहाँ मैं ये बोलूँ कि मैं वैलोरेंट स्ट्रीम करूँगा कॉन्फिडेंटली हाँ पहले तो अभी 12-13 की वॉचिंग रहती थी अब 2-3 की आ रही है पहले गेम अलग था ना people staying here पीयू too. खेलते थे पीयू के लिए तो Wait a एक्टिव second. प्लेयर होते थे ना The स्ट्रीम पे phlogiston around ये here स्टोरी is मोड गेम है jumbled इसमें ऐसा up. नहीं है कि तुम I can also इसका smell ज़्यादा a कुछ mix करो of elements in the air. ये Pyro, पर electro, and some other elements as well. ओके Peach told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. ओके It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. लो भाई Judging from what's left on the ब्रांड scene, बना दिया there फाइव must have been a fight. वैसे बात तो सही है पर After ठीक है that, the factions seem to have gone their separate ways. कॉलेज में Both the हुआ नहीं phlogiston यार and the कॉलेज में नहीं भाई elemental जॉब traces है in the air मेरी support that. तभी तो बिजी हूँ कॉलेज में बिजी नहीं होता कॉलेज में बिजी इंसान कब होता है जब एग्जाम चल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दैट्स इट जॉब तुम्हारी परमानेंट तुम्हें बिजी कभी भी उसमें उधर तुमको ध्यान देना होगा yes Shiloran can heal too perfect or I know Furina can heal लेकिन when we need Furina attack तो सब ठीक है we need to keep it at high HP हाँ Furina तो ठीक है Furina कोई बात नहीं है लोग इंडस स्ट्रीम कर रहे हैं भाई अच्छी बात है सपोर्ट दिखा रहे हैं बट वो थोड़ा मैं मोबाइल गेम तो वो भी नहीं है We found before. Paimon's thinking. चलो अब पता What चल if गया Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? मुझे भी being held by the force of indifference like you wouldn't have been able to overpower them. Given there are two signals leading from here, we should split up as well. देखो वो स्ट्रैटेजी भी होती है I'll take उनकी this अपनी direction स्ट्रैटेजीज हैं and leave the other one to मैं you. ब्लैंक वर्डों में Let's बोलूँ meet तो up यार again लोगों को later. ऑडियंस चाहिए और नया गेम है कुछ दिन के लिए तो ऑडियंस रहेगी भले वो लोगों को पसंद आए ना है पर Auroron, लोग what the शुरू heck के are 2 you 3 doing? 4 दिन तो It's खेलेंगे ना one thing to वो trouble 2 3 me, 4 दिन but में now I अच्छी had to खासी bring को other ऑडियंस people गैदर into करने this का as एक वे well. है Oh, you little brat. तो नथिंग अगेंस्ट And एनीवन off she goes. बट पार्ट है Traveler, did you hear all of that as well? यप Once मैंने while we left, that voice went away as well. Paimon even Yeah. tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. so tell the television doesn't go So you were okay thinking the same thing? भाई इंडिया में Paimon गेम also डेवलपमेंट का thought that सीन if इज we वेरी could बैड hear टू what बी she was thinking, अभी then स्टार्ट हो Paimon रहा है would यार hear अभी what तो we were स्टार्ट भी thinking in मतलब our ये भी नहीं heads. कहूंगा स्टार्ट ढंग से हुआ है लोगों ने ट्राई करना शुरू किया She है did say वो that है she was quite भाई adept इन्हें at this पैसा भी spell. मिलता है And it खेलने doesn't का sound ऊपर like से she's न्यू had गेम any है trouble व्यूअर with it आएंगे in the देखने की past. गेम अच्छा है या नहीं Huh, 4 दिन बाद maybe we're कम a लोग special खेलेंगे case and बस can वही hear her बात है thoughts as a side effect. If you think about it, she's सबने really तो got a स्ट्रीमर्स lively inner गेम को world. कॉपी पेस्ट It करना है paints quite a different भाई picture देखो from यार वो Paimon's first impression ग्रो of her. करने का वे है वो नहीं है क्या वो ग्रो करने के वे है और विच इज ओके भाई करना पड़ता है यार लाइफ में भाई काम तो करने ही पड़ेंगे ना कुछ तो Paimon sees करना some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा भाई मेरा फ्लोजिस्टन भर दे जल्दी इंडिया डेवलपर ने बनाया हाँ इंडियन डेवलपर ने बनाया था अरे बात ये ना अभी इंडियन डेवलपर्स नए नए स्टार्ट हो रहे देखो ऐसा नहीं कि तुम अभी ये जंक्शन खेल रहे हो उसके अंदर इंडियन डेवलपर्स नहीं है ठीक है या फिर तुम कर रहे हो वो
इंडियन कंपनी है, ये नई नई इंडियन कंपनी बोल Did you सकते find हो, ठीक है। डेवलपर्स इंडिया के गेमिंग डेवलपर्स काफी ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग गेम्स में है, जैसे टेंसेंट में लोग काम कर रहे हैं, होयोवर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा अरे और अलग अलग कंपनी तुम समझ ही लो यार, उन सब में काम करते हैं, ठीक है, लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग काम नहीं करते, पर उन्हें अभी जो नई कंपनीज है ना, कोई भी गेम बनाने के लिए, कोई बात बताता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं जो बेसिक नॉलेज मेरा, क्योंकि मेरी फील्ड से बोल सकते हैं, जुड़ा ही हुआ है एक तरीके से, एक्सटेंडेड काइंड ऑफ थिंग है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि किसी भी गेम को बनाने के लिए भाई कॉस्ट बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस तो जाता ही जाता है, एक्सपीरियंस चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, छोटे से गेम को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बात सिंपल इतनी ही कि अभी इंडिया में उस चीज़ के लिए उतना पैसा देने वाले कंपनीज नहीं है, उतना पैसा लगाने वाली लोग नहीं है उस चीज़ में, उस इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया के डेवलपर्स को, अगर इंडियन कंपनी नई नई कंपनी आ रही जिनके पास पैसा नहीं है, तो भाई वो उतने अच्छे डेवलपर्स को नहीं रख पाएगी, ठीक है। हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि इतनी भाई फंडिंग और टाइम भी लगता है, बाहर की कंट्रीज में ना उसको वैल्यू देते हैं, यहाँ तो ई स्पोर्ट्स का मुश्किल नहीं, ई स्पोर्ट अच्छा खासा इंडिया में एक अच्छा बूम हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ई स्पोर्ट को अब इंडिया में ई स्पोर्ट रिकॉग्नाइज होता है, पहले के पबजी आने के प्री पबजी एरा पहले और अभी पोस्ट पबजी एरा में बहुत फर्क आ चुका है, बात वो नहीं है, बात ये देखो, बात फंडिंग से स्टार्ट होती है, फंडिंग से कैसे स्टार्ट हुई, फंडिंग नहीं है कंपनी के पास, तो भाई कंपनी के जो डेवलपर होंगे वो उनको उतना पैसा नहीं दे पाएगी, जब उतने पैसे नहीं दे पाएगी तो यार उस क्वालिटी के डेवलपर नहीं आ पाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, नए डेवलपर्स को उनको काम कराना पड़ेगा जिनको कम नॉलेज है, जिनके पास कम आइडियाज़ है, ठीक है, एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। तो भाई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो पैसा भी चाहिए, उसको पैसा ही तो कमाना है एट द एंड ऑफ दैट डे, ठीक है। तो यार जब कंपनीज के पास फंडिंग नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो डेवलपर्स वैसे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चलता है, तो ये स्टार्ट हुआ है, जब इससे ही बूम मिलता है, किसी भी चीज़ की स्टार्ट ऐसे ही होती है, तो नथिंग अगेंस्ट देम कि भाई इंडस्ट्री यार ऐसा गेम है या वैसा गेम है, हाँ वो ठीक है, हमें बाहर के गेम्स, बाहर की गेमिंग इंडस्ट्री आज से 30 साल पहले से चल रही है, तो यार वहाँ के गेम आने में वो 30 हमसे बहुत साल आगे हैं, तो हमें कैचअप करने के लिए कम से कम उसका आधा नहीं तो कम से कम यार 10% टाइम तो रुकना चाहिए, मतलब 10% तो थोड़ा बहुत कम बोल दिया, मतलब एटलीस्ट यार 25% टाइम तो रुकना चाहिए। अगर वहाँ की इंडस्ट्री 30 साल से मगर मान लो काम चल रही है, पार्टनरशिप करके भी ट्राई कर सकते हैं ना यार, पार्टनरशिप करके भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप ना ऐसे हवा में नहीं मिलती, ठीक है। अगर बाहर की कंपनी को पार्टनरशिप में बनाना गेम तो बाहर बना ही लेंगे, कंपनी बाहर क्या वो करेगी, वो बना ही लेगी, इंडिया की किसी नई बिगिनिंग कंपनी के साथ बना के उसको बेनिफिट नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि बाहर के गेम इंडिया में चलेंगे लॉन्च नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इंडिया में गेम सिर्फ इंडियन कंपनी लॉन्च करेगी तो भाई बाहर वालों को इंडिया की मार्केट में आना है तो उनको इंडियन कंपनी से करना, बहुत सारी पीछे बिहाइंड द साइंस चीज़ें चलती हैं जो अभी शायद उस एज में तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मुझे उस चीज़ का थोड़ा एक आइडिया है, थोड़ा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई टाइम दो इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा कैचअप करने के लिए टाइम दो, क्योंकि वो बहुत पीछे है, बहुत लेट स्टार्ट करा है उस रेस में, उस जिस रेस में वो पार्ट लेना चाह रही है ना उसमें टाइम, सीधी बात है कि मरोगे तो भगवान देखोगे, हैं इट्स अ गेम ब्रांड में जिसको एक बंदे ने बनाया है, अरे आई नो द प्रॉब्लम्स वी आर बिहाइंड, लेकिन आई नो शुड ट्राई टू मेक एन ओरिजिनल नॉट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट से बुरा लगता है। हाँ वो एक चीज है कि नया कॉन्सेप्ट ला सकते हो, नया कॉन्सेप्ट ला सकते हो, आई थिंक सो, वो कॉन्सेप्ट कौन सी यार हॉरर गेम आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले ही आई थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से यूनिक नहीं थी पर उसमें उन्होंने अपने एलिमेंट डाले थे यार, वो अच्छी थी, ठीक है, कमला 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 कमला, ठीक है, वो पूरी यूनिक नहीं थी, था उसमें भी काफी गेम से लिया ही गया हुआ था, पर वो अच्छी थी, ठीक है, वैसा ही कुछ निकलेगा, बनेगा, टाइम है। हाँ वो जिसको कर रहा है उसको भी पता है क्या कर रहा है, हाँ वो बात है। और देखो एक बात बताऊं, गेम में नए आइडिया तो भाई इतनी जल्दी से नहीं आते हैं, तुम देख लो ना, कहाँ आज के कैटेगरी में क्या ही है, तुम बैटल पास गेम्स, ठीक है, सॉरी बैटल पास बोल रहा हूँ,
बैटल रॉयल गेम हो गया, या तुम्हारे गाचा गेम्स के टाइप हो गए, या तुम्हारा टीडीएम टाइप का गेम हो गया, यही चल रहा है मार्केट में। या फिर रेसिंग, रेस कर लिया तुमने। भाई वो इतना आसान नहीं होता जितना तुम बोल रहे हो ना, शायद उतना आराम से नहीं होता। जस्ट जस्ट सही प्रेजेंट करने में तुम्हें हो जाता है। चलो बाय द वे करते हैं, आई फाउंड सम ट्रेल, लेट्स कंटिन्यू। ये भी करना जरूरी, वरना हम बैठे रह जाएंगे इसी में। So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. What? ये किसकी साउंड है? Don't tell me this is Auroran है। गेम वॉइस फट रही है भाई, गेम वॉइस फट रही है। नहीं यार, नेट तो मेरा प्रॉपर चल रहा है और मुझे नहीं फट रही है, तो या तो प्रॉब्ली स्ट्रीम का इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपके नेट का इशू हो सकता है। भाई दो चीज़ें हैं, गेम वॉइस तो नहीं फट रही है। क्योंकि मुझे नहीं, मुझे तो एटलीस्ट पता चल जाएगा। तो फट रही होगी तो वो स्ट्रीम की वजह से फट रही होगी या आपके नेट की वजह से फट रही है। ओह व्हाट ये कहाँ पे आ गया भाई? हाँ स्ट्रीम इशू हो सकता है, वो स्ट्रीम पंगा कर रहा होगा। How did I get here? What the heck? I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Huh? Seriously? You are saying traveler this thing? I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. What Given the your combat hell? proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Lol. Hello, traveler. I'm Auroran, the one you've been searching for. We have escaped the Fatui's custody. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. With the captain. Greetings, traveler from afar. Captain! Be careful with this traveler. Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to her. It was I who tasked Auroran with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. So you are working I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you. In person. Okay. Guys, थोड़े से अगर मैं चैट ना पढूं तो समझना, मेरा फोकस इधर है पूरा. Explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. Okay. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Okay. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. I'm fine. Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! She froze for a moment and then just collapsed to the ground.
Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? I'm fine, just a little lightheaded. Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. I'm taking you on this But trip with had me. I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. Should I dress that? Okay. Okay. Now we are If Batman. you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exercise any Ghosts ghosts or or weird weird stuff. stuff that you picked up in the Night Kingdom. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. And I'm feeling fine now. But In any case, let's take a bit more time to rest now. I said I am fine. Okay, but I cannot keep an eye on the chicken. Need to be more careful next time. Feeling better yet, Traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. That is I probably. have a feeling that Auroron is probably being held inside. Oh, so it's close by. Then Then let's- let's head over right away. I was holding you up. Okay. Well, I recruited you क्या to be बोले my Indian helper, gamers need to which means explore we're in this different together. genre, you know, Like the आजकल wind तो and the BGMI भी clouds. ठीक से नहीं We चलती either है. move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. And I will. I shall promise you this, that I will. Make no mistake. Oh. Look over आपको क्या there. लगता है कैप्टन विलन है? Paimon thinks she sees वो someone तो in the middle of the obvious camp. links दोनों चीजों पे. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. Ancient YT fan animators or bad or something. I'm talking about how this ship character. Okay. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. What? Without the sun, I cannot see the Cute, I truth. suddenly want You are to say currently for her blocking now. the light, so I must beseech you to Lol. move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo jumbo. Post Wow. Chalitsky. I'm going to rip that guy's head right off. भाई ये पाइमॉन के लेवल की गुस्सैल निकली है See, तो. Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's go kick their butts. Oh my god. So now there is something, my some count. kind 3, of profanity 2, now. 1. Okay. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Well, The wind knows it. Busted. Gotcha. Strike a pose. Wind strider. अरे यार अब तो मेरे को अल्ट मारना ही पड़ेगा. I was just Auroron! guys change the topic, get on Archon. ये पाइमॉन को तो खाने का ऑप्शन होना I चाहिए know था. she's called तुम्हें Granny पता नहीं है? instantly, but it's still She kinda is the weird emergency hearing food. someone actually call her Granny. Using the skills and using the ships. And greetings to you too.
other granny. Granny? What did you just call her? Granny. Is that not right? You are Granny's Right. friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you're also a granny. My granny. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. Oh, man. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Are you seriously kidding me? Uncle, like your Gramps and Grannies? Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers Seen looking after for Capitano their cutscene, next huh? victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. Lol. I'm sorry, ज़्यादा ही हो Granny. गया. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. अरे भाई. इतना क्या भाई? They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. Oh. So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary Granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value and not stop to think? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is recite the 3. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the masters raise this guy? Oh. भाई ये सीन बढ़िया है. ये पूरा गाइड सीन बढ़िया है. Yes, ma.
भाई बढ़िया सीन था ये पूरा. Conversation was like nuts. Whole conversation was nuts. Okay, let's go. अरे यार मेरे को वो कर लेना चाहिए था I टेलीग्राम. see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Lali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Koyopa. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Lali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. That's shitty. Sure, I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. I'll be counting on you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You भाई can इस just go phrase का twiddle बहुत your गलत thumbs or मतलब भी something निकलता while you है. wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, other Granny. Way too polite. God, so funny. I promise. I would have never guessed that he could have done so much hard work behind that plan is bad. Really want. चलो मैं बाद में आता हूँ. मेरा नाजायज बेटा मुझे बुला रहा है. अबे यार. ये ठीक है. ये फ्रेज भी मेरा सुना हुआ है. Well, never mind. We're finally done. Alright, it's time to find some grub. Huh? What is it, Traveler? What? That captain? Keep your voice down. Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Lali and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. We still need more information. You're right. More. Still, And Paimon let's go appreciates gather you it up. telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Bye bye Edge. Thank you so much for joining the stream, buddy. चलो एक काम करते हैं because I might close this game in haste. इसको जाके claim कर लेते हैं और फिर अपन आते हैं वापस. डेलीज क्लेम कर लेते हैं वरना पता चला डेलीज भूल गए इसके चक्कर में क्लेम करना. Ad Astra. Thank you for Ad Astra. Okay, and these two are also done. नहीं मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ मुझे पता है मैं याद रखता मोस्टली पर क्योंकि मेरी आदत ये है ना कि मैं आजकल गेम बंद कर देता हूँ सीधे बिना चेक करे स्ट्रीम के बाद स्ट्रीम नहीं कर रहा होता तो मैं वो कर लेता बेस फॉर 20 अगर मैं ऑफलाइन खेलूंगा ना तो मैं मुझे याद रहेगा कि वो पर स्ट्रीम जब मैं करता हूँ ना तो मेरी आदत कभी कभी ये होती है कि फिर मैं यहाँ से जाता हूँ किसी और से बात करने लगता हूँ बात करने में बंद कर दूंगा.
अबे अच्छा नेक्स्ट डे है क्या? मुझे लगा फॉलोइंग डे बोला है। 20 चल भाई 24 घंटे तू भी ले लो। मैं बता रहा हूँ बहुत स्लो इन्होंने एनिमेशन डाला, थोड़ा फास्ट कर दो यार। इतना टिक 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 एक्चुअली में किसी को नहीं सुनना। स्किल डॉग एंड देन आल्सो प्ले डिटेल्स पढ़ने के बाद कर दूंगा। अरे फॉलोइंग डे नहीं पढ़ा था मैंने सिर्फ आर्ट पढ़ा। मैंने बस मतलब आर्ट पढ़ा, फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा था मैंने। मुझे लगा फॉलोइंग डे ही लिखा है उसमें, एटलीस्ट मैंने अज्यूम कर लिया था। मैं यहाँ पे गोभी को, मूली और पत्ता गोभी क्यों उठाने आया, लेकिन बहुत बढ़िया सारे पत्ता गोभी दे रहे हैं। Let's go. We are on eastern side. Captain, show yourself. I see anyone. Oh, please don't let this be a trap. यार चिप्स से याद आया, चिप्स नहीं है यार। मैं चिप्स याद दिला दिया, मुझे याद आ रहा है। Good evening. Nice to see you. चलो बाय बाय आशुतोष, thank you so much for joining us. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? What are you, a I'm ghost? terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Sometimes Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Let's get straight to the point. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. I am only interested in the Yet, intel. there's been a lot of talk about you. Child. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. Acha. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. And why is that? I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Maiya would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tavat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. Okay. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late.
there will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the abyss. And we aren't have to make the you- decision for her, here and now. And aren't you the abyss? Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa's plan? There's something to do with this I one. knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. And what is that now? Someone's here. ये छापा पड़ने The लगा. captain disappeared! Something is rapidly approaching. Oh no. She's granny. Something? Bad news, chump. It's your granny. अरे भाई पीला है. When did you get here? क्या I पीला? knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. ये छापा नहीं है. ये Dare तो you go दिया behind our पीला backs है. like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? ये पीला है. Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Yeah, this is no place to discipline a child. अरे भाई. Listen well, ये Aurora. झाप वाला नहीं था ये. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? ये फीलिंग नहीं है, ये पीला है. मुक्का मारा एकदम घसीट के तोड़ा है प्यार से. इसको कुटाई बोलते हैं. What? एक सेकंड. Issue generation can be anonymous on the government. Way does the money up to was able to lead the questionnaire under certain fix an issue whereby chapter and two other is unable to take effect under certain. Okay. How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! अरे भाई. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No मुझे ऐसा क्यों answer? लगने वाला है Think कि you're being ओरोन smart? गायब होगा यहाँ से. Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose ये in गायब होने वाला Natlan? है. जैसी हालत इसकी लग रही है. या तो ये भाग Really? जाएगा या तो लड़ने You're लग just going जाएगा. to तो में से stonewall कुछ me? होगा. लड़ेगा, लड़ने के जैसा कम लग रहा है मुझे ग्रैनी से. गायब होने के ज्यादा लग रहा है. Just use your brain for a second.
What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. Definitely a little awkward. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would look at me the same way you're looking at me now. Helpless and embarrassed. Wait, but you're the one getting your head chewed off. Stop making this about us! Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. Granny should be done with her scolding session soon. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. बढ़िया कैरेक्टर है भाई बना रहा है मुझे इसकी डायलॉग सुन के वैसे जो भर के मार रही है ना ये Why would you listen to an old hag like me? क्या बात है यार all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from you. अब रोने की क्या सिटला ली? Who's Aoife? A delivery person? वही रो देगी लग रहा है. That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. काफी इंटरेस्टिंग है. मैंने सोचा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे ये. मतलब इंटरेस्टिंग इस सेंस में बना दिया भाई इन्होंने तो मतलब पहले शुरू करा है. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? Tell us anything about his goals. I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Oh, that brat. I swear. What the captain said, and also get the Doros. We need to find
Auroran की कौन सी duty है? We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all this. You better figure it out then, because I want those answers. यार डिजाइन देख के मन नहीं कर रहा सेटलाली को इतना भी ज्यादा. मुझे लगा था सेटलाली को निकालूंगा, but I'm not that curious. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? All right, it's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. अरे भुक्कड़, Then you let's are the go. emergency food. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. Well, Paimon got a secret food fund, huh? How did this become Paimon'sville? Because you can pay. See, Lolly looks quite down on herself. तुम्हारा food fund है. All right. It's on Paimon this time. What's one meal to the best guide in Teyvat? So you can just sit back and enjoy, sweet Lolly. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some Mora. Definitely. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely useless. Sure, that's fine with us. भाई मैं चैट पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं चैट से इग्नोर कर रहा हूँ अभी. Sweet Lolly. और मैं तुरंत भी नहीं पढ़ रहा हूँ. ये वाली तो मैं तुरंत पढ़ ली. सारी चैट्स तुरंत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में स्पॉयलर्स नहीं लेने थे. और मैंने जहाँ पे एक बार स्पॉइलर देख लिया था ना, उसके बाद से मैं चैट में बहुत डिसइंटरेस्टेड था. Let's go the very end. खाना और पीना दोनों होगा. भाई ये होता है डिलुक का टैवन, तो मजा ही आ जाता. What are you looking at? Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? But Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss! Do you think she's drunk? I'd be surprised if she wasn't. There you go, miss. Oh my! It's not every day you get to see Granny Itzley here with यहाँ some पे chest है. friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves recently. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder. No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Nightwind. Most days, hardly anyone even dares talk to her. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chanka? Chanka? Oh, please, Granny, I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave.
Well then, you have my thanks. Wow, okay. भाई आंखें क्या हो गई ये? See Lowie? See Lowie? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Are you still with us, See Lowie? You're kinda talking to no one. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. अरे भाई. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. I mean, come on. Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? Granny See Lowie, Interesting you're not a monster character. at all. She. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Yes, I am a new kid. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. Well, That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. wow. Nice. Did she just fall asleep with her Only eyes BBC open? Earth. Oh, Game jeez. volume is too much and I can't Behind hear this your voice. pitchfork अच्छा. curtain, a chapter of By the way, hatred hello, reveals itself. मैं तो कुछ बोल ही Behind नहीं the रहा था. smoke, the lingering smoke. सुनोगे कहाँ से? मैं तो खुद गेम सुन रहा She's हूँ. meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Warning, warning. Red. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? What? Traveler? Paimon? होश में आ गई? What's wrong? Happy Lakshmi Puja buddy. I'm gonna hurl. Hang on, just keep it in. Phew. Okay, it's passed. That was a close one. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up, not once. Are you feeling okay? Want to take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say. But I can't. I can't. Why not? can't you? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Exactly. Please, Listen to Paimon, it's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would Well, I you won't think of mind me if I this. were to start dumping all of my I would complaints definitely on love you that. after we've only just met? Oh, Paimon gets it.
You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame. I've lived all these years and still can't get rid of it. You know the feeling too. Surely you know the feeling too? Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. Listen carefully, try not to get too upset. It's okay. As possible. So, you heard. You heard my... You heard... It's okay, Sea Lolly. You had every right to complain about those things. No. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much! It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! So that, happens to you a lot? It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. You okay? Anyway. Take a walk with me. I have things to share with you. Welcome. इसकी आर्टिफैक्ट चेंज हो गई है. Given up, like those criminals who just confess everything and accept their fate. Yeah, we should follow her. She's too interesting to left alone. सोनी बीबीसी को अर्थ को सब्सक्राइब भी करना होता है. ठीक. ये सब ना होता हमसे. हम इन सब चीजों पर यकीन रखते हैं. चलो स्टेडियम तो आ गया. Well, great view, right? I love coming here by myself. Wow, it's beautiful. Thank you for bringing us here. You're making me want to cry. Oh no, what do we do? Please don't cry. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even after you helped me all this time. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right, I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her. That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you... We don't find you scary at all. Yeah, why? Who thinks you are scary? That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. Yes. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. Look,
We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right? Yes, but Auroran's a special मुझे नींद case. आ रहा है. चलो, thank you so much for Maiya joining. already told you about her Good plan. night, चल भाई. है ना? And you've given मिलते so हैं much आपसे help अगली to stream पे. Auroran and me. You आज तो मैं deserve to शायद learn पूरा the full आर्कन कर भी truth. नहीं पाऊंगा. टाइम जाएगा. Auroran's not like other तो अगला people. As I वापस से जब भी mentioned, करूंगा ना he was मैं स्ट्रीम abandoned as a करके ही करूंगा. child. The Hopefully reason जल्दी होगा. being, Maybe कल his नहीं तो soul is परसों. incomplete. The Masters of the ऐसे? Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. And thank you once again for He the was support. just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't And devoured thank by you so some much for wild this beast. Sony BBC The here. Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroran's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. A possibility to turn Auroran into a vessel for lost souls. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Sending a link was on the Night Kingdom. Now, you see the problem. Exactly. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even further. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroran, would be sacrificed in the process. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed, and Auroran escaped with his life. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. बताया तो था Maybe they गूगल didn't कर have लो my मिल explicit जाएगा तुमको approval, साइड पे. but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Auroran would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not That's right. harsh. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroran would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me, he asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Wait, what? It's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Auroran has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine what they told him. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroran into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. Yes, agreed. You Back. don't look Seconded. so good, Sweet Lolly. Maybe you should head back and get some sleep. Yes, you should. Probably drank too much. It's okay. The fresh air is doing me good. No, you should sleep first. Okay. Forget that. I need to go home. I
hit it a little too hard. And yeah, don't worry, don't have to do anything of it alone. You've helped me so much already. How do I even begin to thank you? Pokemon Hey, games. we're friends, Unite aren't we? the stuff. Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. Romax. We can figure out our next move in the morning. खेल तो सकता हूँ लेकिन पीसी पे उसके लिए कम वो लगेगा, एमुलेटर अच्छे लगेंगे। पीसी पे एमुलेटर उतने ज़्यादा है नहीं ढंग के। I like the sound of that. Well, ready. Auroran's probably back with the captain, don't you think? Yeah, we should tell them from what we learned. You mean about the backup plan? Do you Well, really believe what the captain told us? She needs to know the Yeah, you're right. guidance. We should just go to her directly. But she's probably asleep. मैंने बहुत रोम हैक खेले, इतने रोम हैक कब से मैं रोम हैक खेल रहा हूँ जब तुम्हें रोम हैक क्या छोड़ो पोकेमॉन का पी भी नहीं पता था, तब से मैं रोम हैक खेल रहा हूँ, मतलब तब से खेल रहा हूँ, तब से खेल रखे हैं मैंने, तो मेरे को रोम हैक पता है, पर हाँ करते हैं। फिलहाल बज रहा है 12:30 और मुझे दोबारा से जाने का मन है नहीं, क्योंकि कल वापस से एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऑफिस भी करना है। चलो आज के लिए इतना ही पार्ट जंक्शन का हम रखते हैं और इसी के साथ स्ट्रीम को बंद करने का टाइम। पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर वॉल्यूम 1 मैंने रेड नहीं खेला है, मैंने येलो खेला है और ग्रीन खेला था शायद, हाँ ग्रीन खेला है, रेड का फायर रेड खेला है मैंने, हाँ ग्रीन वाला खेला था मैंने, येलो खेला है पहले दोस्त उसमें, और कांटो के तो मैंने सिल्वर और गोल्ड दोनों के रखे हैं। सोल सिल्वर और हार्ड गोल्ड था ना, उसमें भी शायद मेरे को एक मिला था, हार्ड गोल्ड मिला था, लेकिन मैं खेलना नहीं था, पड़ा हुआ था मेरे पास पुराने फ़ोन में। बट फिलहाल ये बातें अगली स्ट्रीम पे करेंगे। आज की स्ट्रीम इतनी ही थी, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है, मुझे सोना भी है, नींद भी आ रही है मुझे, ठीक है, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लाइक वी ऑलवेज से गाइस, पीस आउट।